Neha, आपने okay. So good morning everyone. Today we will be studying on the topic abattoir effluent treatment. Okay. So move to the next slide, please. So now the first question arises is that what are effluents? Basically, effluents are the liquid wastes which are disposed into water bodies. These effluents are disposed to the water bodies either treated or untreated. This decision of treatment is based on certain criteria, like the composition of the particular effluent or the BOD of the effluent, that is biological oxygen demand or biochemical oxygen demand of the effluent, its pH, the concentration of suspended solids, and many more factors which we'll discuss in the later on slides. Okay, so moving to the next slide. So water effluents, is this clear to you, everyone? Yes, sir. Effluents are basically wastewater. Yes, ma'am. Okay? Clear hai. Okay, so Hello. now depending upon प्रणाम मैम. हाँ प्रणाम. अब क्लास शुरू हो गई, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग क्लास में कंटिन्यू कीजिए. Yes. Now depending upon the activities taking place in a plant, the composition of the effluent varies. Okay, for instance, in chemical industries, we have heavy metals, detergent, toxins, and a variety of inorganic material. Okay. In case of leather processing industries, one will have salts, chemicals, tanning agents, animal tissue, microbes in its effluent. And in mineral industries, the amount of inorganic suspended solids will be high. Is this clear? That depending upon the industry, the effluent composition will vary. Now, when it comes to abattoirs and meat plants, since we deal with living tissues, hence the effluents will have high concentration of organisms which may be extracted during gut cleaning, suspended solids, nutrients in the sense that since we are dealing with living tissues, hence the nutrient concentration of the effluents will be high. Then suspended solids produced during activities like cleaning, washing of animals and washing the area surrounding the plant. And detergents, obviously the detergents are used for the purpose of cleaning. Is this clear? That what are the general composition of effluents and what is the specific composition of effluents derived from abattoirs and meat plants? Okay, so all components of the effluents have a potential to pollute water. Now, is this slide clear? Any confusion regarding this slide? Okay, so we'll move to the next slide. Now the question arises that why do we need to treat effluents? It is a cost-bearing process and the processing unit needs to be established, which again involves cost and labor. So why does one need to treat the effluents? Now we all know that in an aquatic system, the aquatic animals thrive on the dissolved oxygen in water. Their ecosystem is vulnerable to changes in temperature and pH. So as we have studied in the previous slides, what happens is that the effluents are rich in organic matter, microbes, suspended solids, and related materials. Now, these microbes compete with the dissolved oxygen present in the water body, hence depriving the fish and other aquatic living beings of water. See, okay. Moreover, the suspended solids like chemicals, salts, detergents, they tend to disrupt the pH balance in the water bodies. Hence, the effluents need to be treated so that the aquatic is not disturbed. Is this clear? That why do we treat the effluent? Is that clear to everyone? No, ma'am. Please once again. ठीक है, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ. जो effluents हैं, उसमें क्या है कि बहुत टाइप के सस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं. क्योंकि इन effluents में या वेस्ट वाटर में लिविंग टिश्यूज होती हैं, माइक्रोब्स होते हैं. आप लोग अपने ऑडियोज को म्यूट कीजिए. लिविंग टिश्यूज होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं. तो क्या होता है कि जो ये माइक्रोब्स और लिविंग टिश्यूज हैं, ये जाके मल्टीप्लाई करते हैं पानी के अंदर जब हम इनको डिस्चार्ज कर देते हैं. फिर ये माइक्रोब्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं. जब ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं तो क्या होता है कि जो फिश है उनके लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाता है.
तो क्या होता है कि जो फिशेस है वो दे स्टार्ट डाइंग, देयर इज अ कंपटीशन एंड द लिविंग सिस्टम ऑफ द इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब्ड। मोर ओवर अगर हम केमिकल्स डालते हैं, मान लीजिए डिटर्जेंट्स है या कोई पर्टिकुलर केमिकल है जो यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर प्लांट में, अगर वो वाटर के अंदर जाता है तो क्या होता है कि जो पीएच है, जो केमिकल बैलेंस है विद इन दैट इकोसिस्टम, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से उस वाटर बॉडी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है। क्लियर हो गया? ये इफेक्ट ना पड़े इसलिए हम एफ्लुएंट को ट्रीट करके भेजते हैं वाटर बॉडीज के अंदर। क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, so normally allowed BOD of an effluent also that is wastewater is around 2 to 8 mg per liter or parts per million. Okay, is that clear? So moving to the next slide. Now, when we take an abattoir into consideration, there are various points at which effluents are produced, and depending upon those points, the composition of the effluent varies. For instance, in lairage, during washing of animals in the lairage or lairage room or cleaning of the lairage room, what the effluent we get is high in organic content as well as in suspended solids. Like there will be sand, there will be microbes, there will be body sweat. So these things will be there with the water. Moreover, the leftover water in the water troughs present in the lairage, that is also discarded. So it also becomes a part of the effluent. Then comes bleeding. So during bleeding, blood is there, then floor washings, then detergents used for washing those floors, ingredients, those will be the ingredients of the effluents in the bleeding area. Then comes dressing area, animal tissues, body fluids, and floor washings or animal washings. During paunch handling, the gut material is there. This gut material is rich in nutrients as well as microbes. Those microbes which are already present in gut, those microbes are also released along with the effluent. Then byproduct handling. Now during byproduct handling, a number of chemicals are used. So when the effluent is obtained from a byproduct handling unit, then those chemicals also play an important, become an important part of the effluent. For instance, chemicals used in freeze drying or particular chemicals used for preserving or treating a particular byproduct. Then comes cleaning. Cleaning, as we all know, involves detergents, sanitizers, and the water which is produced or the wastewater which is produced during cleaning mainly comprises of solids, suspended solids, fats, detergents, chemicals, sanitizing agents. Okay, is this clear that at different point, different effluents are produced and each and every effluent has a different composition based on its origin? Is that clear? Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, then we'll move to the next slide. Then while we talk on the topic of treating effluents, two very important terms come into play. One is chemical oxygen demand and one is biochemical oxygen demand. So, for instance, we will take a particular amount of waste, say about 1 liter of waste, and then we will see the amount of oxygen required to oxidize the total organic matter present in it into carbon dioxide and water. Is this clear? Amount of oxygen required to oxidize the total organic matter in it into carbon dioxide and oxygen. Till this point, is it clear? Now, what happens in chemical oxygen demand? As we have talked about organic materials. So in chemical oxygen demand, we will study all organic material, whether it's biodegradable or non-biodegradable. So in non-biodegradable, components such as cellulose are also taken into consideration. This is a rapid method of determining the oxygen demand, and it takes around 2 hours to calculate the chemical oxygen demand of a particular liquid. Now, in case of biochemical or biological oxygen demand, we can only measure the biodegradable organic matter, because the biochemical or biological oxygen demand depends upon bacteria and which decompose organic matter. So it
So in this case, only biodegradable organic matters are taken into consideration. And in order to estimate the biochemical oxygen demand, we need a minimum of 5 days of incubation at a temperature of around 20 degrees centigrade. Now, is this clear? As much as I have explained it to you, what is chemical oxygen demand and what is biochemical oxygen demand? Yes, ma'am. Okay. Okay, so as we have discussed that under chemical oxygen demand, we consider both biodegradable and non-biodegradable organic matter. So the value of chemical oxygen demand is always more than biochemical or biological oxygen demand. Okay, is this clear? Okay, so in chemical oxygen demands, we used strong oxidizing agents such as potassium dichromate. Okay, this is one of the examples. Other chemicals may also be taken into consideration. Now moving to the next slide. ये COD में Now, कैसे हो गया BOD से? क्योंकि COD में हम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट देखेंगे of oxidizing both biodegradable and non-biodegradable organic material. ठीक है? जब हम BOD करते हैं तब हम सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट को देखते हैं. एक पर्टिकुलर वेस्ट वाटर सैंपल में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल दोनों प्रेजेंट होंगे. ओके, अगर हम सिर्फ बायोडिग्रेडेबल को करेंगे तो हमें कम ऑक्सीजन लगेगा, लेकिन अगर हम दोनों कंपोनेंट्स को करेंगे तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा. राइट? इसलिए COD इज ऑलवेज मोर देन BOD. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Okay. Now moving to, so now we will take into consideration the BOD of effluents produced in abattoirs and meat plants. So on an average, the BOD of the effluents produced in abattoirs and meat plants vary in the range of 1600 to 2000 ppm. This is an average unit. But if we take each and every type of meat plant separately, so poultry meat plant produces waste having BOD of about 1000 to 1200 ppm. Meat plant produces about 1500 to around 1400 ppm. Fish processing units produce around produce waste value of 1000 to 3000 ppm, and dairy plants produce effluents having a BOD value of 600 to 1300 ppm. Okay. So move to the next slide, please. So these effluents, as we are talking about treatment of effluents, please move to the next slide, the previous one. So the effluent is treated in 3 stages. The stage 1 basically deals with screening of solids and removal of fats. The stage 2 deals with biodegradation of organic material, and the stage 3 deals with sedimentation and disinfection. Moving to the next slide. Now in stage 1, the following steps are considered. First, primary filtration. In this, the effluents are passed through a strong steel mesh. So the larger particles are removed in the first step of filtration, or the primary filtration. Then in the secondary filtration, the primary filtrate is refiltered by a vibrating screen with a fine mesh arranged at an angle. So as you can see, the mesh is fine and it is arranged at an angle and it is moving. So more of the finer suspended solids are removed during this step. Then is the third step, that is fat separation. So what happens in fat separation is that the effluent is agitated, it is churned with the ladle, and air is pumped from beneath. So what happens that during this agitation and air pumping, the fat droplets or the fat particles, they move up towards the topmost layer of the effluent, and this fat is then skimmed out. Then this fat-free filtered effluent is then equalized. It is equalized in an equalization tank where activated sludge having biological stimulants is added in small quantity. Now, by the time we end these 4 steps, 65% of the solids and 90% of the fat is removed.
and the BOD is reduced by 35%. These 4 steps are clear? Any confusion in these steps? इक्वलाइजेशन में करते हैं कि जो हमारे पास ये फिल्टर्ड और फैट फ्री जो हमारे पास एफ्लुएंट बचा हुआ है, इसमें हम थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज जिसमें एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, उसको ऐड कर देते हैं, सो दैट जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए. ठीक है? क्लियर हुआ? Okay. Any more confusions? Okay, then we'll move to the next slide. Then comes the stage 2 of effluent treatment. Now, in this stage 2, as we had discussed earlier, biological oxidation takes place. Now, this biological oxidation is basically of 2 types, aerobic and anaerobic. As the name suggests, one is aerobic, is in the presence of oxygen, and anaerobic is in the absence of oxygen. So in a meat plant, a combination of both aerobic and anaerobic process is used. Now, under aerobic process of biological oxidation, what we do that in an open area, we dig ponds of 1 meter depth, and within these ponds, the wastewater is filled. Then what happens that under open air or ample supply of air, this particular waste is agitated or churned, and then in this process, the oxidation of the effluents takes place. Whereas in anaerobic process, what we do that in a closed area, in an airtight sealed area, tanks deep as 4 to 5 meter are filled with wastewater and it is agitated. So here the oxidation is taking place in the absence of oxygen with the help of anaerobic bacteria. Okay? And the process of anaerobic oxidation, biological oxidation, is more potent than aerobic, as the results are that there is a 60% reduction in BOD of treated water. Is this clear? What is aerobic and anaerobic? How is it produced, and what are the results? Is it clear? Okay. So then we'll move to the third stage of effluent treatment. Now, in the third stage of effluent treatment, what we will do, we will take 2 processes into consideration. One is sedimentation, another is disinfection. So as the name suggests, sedimentation, this process is based on the principle of sedimentation. The biologically oxidized sludge or the biologically oxidized effluent is then kept standstill in a particular container. So out of gravitational force, the suspended solids are removed, moved downwards, and the supernatant fluid remains upwards. This supernatant fluid is then passed off into the disinfection chamber, where with the use of chlorine or UV treatment, it is disinfected, and this disinfected sewer or this disinfected effluent is then passed into water bodies. Is this clear? What is sedimentation and disinfection? Okay. I guess everything is clear. So we'll move. हाँ बताइए. ये सेडिमेंटेशन तो पहले स्टेज में होना चाहिए, थर्ड स्टेज में क्यों किया गया? सेडिमेंटेशन कई प्लांट्स में फर्स्ट स्टेप में करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे काफी पार्टिकल्स हैं जो फिल्ट्रेशन में भी रह जाते हैं. या मान लीजिए कि कुछ मैटर बनता है आफ्टर क्या कहते हैं फैट सेपरेशन प्रोसेस, इक्वलाइजेशन प्रोसेस, या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस. वो जो पर्टिकुलर मैटर बनता है उसको रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन एक्स्ट्रा किया जाता है. ओके, फिर ये जो स्लज बनता है ये टू एन एक्सटेंट बगैर सेडिमेंटेशन के स्लज का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है? नहीं, बिना सेडिमेंटेशन तो होगा. हाँ बताइए. मैं ये कह रहा हूँ कि बिना सेडिमेंटेशन के स्लज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता. जब तक स्लज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता
तब तक उस पर जो है तो हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। एरोबिक या एनारोबिक प्रोसेस से उसका ऑक्सीडेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सेडिमेंटेशन लास्ट स्टेज में दिया गया है, जबकि इसको तो पहले स्टेज में होना चाहिए था, नहीं, इसके पीछे स्लज के रीजन ये फॉर्मेशन के बाद। नहीं, इसके पीछे रीजन ये होता है कि हम स्टार्टिंग में फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन करते हैं, उसमें क्या करते हैं, पहले हम कोर्स मटेरियल निकालते हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्लज है इट कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। अगर इसमें ज्यादा इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है तो इसको एज अ फर्टिलाइजर या कंपोस्ट भी यूज करते हैं, या फिर लैंडफिल प्रोसेस में यूज करते हैं, तो फ्यूल प्रोसेस में यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, जो कोर्स मटेरियल है उनको पहले फिल्ट्रेशन से हटाते हैं, फिर काफी केसेस में इनको सेडिमेंटेशन किया जाता है। अगर स्टार्टिंग में सेडिमेंटेशन किया जाता है तो स्लज को फिर से ट्रीट किया जाता है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप किसी भी स्टेज में सेडिमेंटेशन करते हैं, आपका स्लज फॉर्मेशन होता है। लास्ट में सेडिमेंटेशन करने से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन हो चुका होता है, तो जो जितना इफेक्ट पड़ता है पर्टिकुलर जहां भी आप उसे डिस्पोज ऑफ करते हैं वो कम हो जाता है। सो दैट इज हेल्पफुल। इसलिए सारा का सारा ट्रीटमेंट करने के बाद सेडिमेंटेशन प्रोसेस कैरी ऑन किया जाता है, ताकि स्लज पे आपको एक्टिविटी कम करनी पड़े। ठीक है, क्लियर हुआ? मैम जैसे पहले पढ़े थे ना हम लोग और अब जो पढ़ रहे हैं ना, ये दोनों में डिफरेंस हो गया है, इसलिए मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, क्या कि ना डिफरेंस हो पहले गया हम लोग बताइए। मैम जैसे कि पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट करते थे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते थे, तो पहले सेडिमेंट कर लेते थे, उसके बाद इफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए लाते थे इधर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, ओके, तब जो भी है अपना ये सारा प्रोसेस करते थे। हाँ, तो यही देखिए यही बात नहीं समझ में आ रहा है कि इसलिए। बात ये है कि आप सेडिमेंटेशन टैंक पहले लगाइए बाद में लगाइए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अगर आप ट्रीटमेंट के पहले सेडिमेंटेशन टैंक लगाते हैं तो जो स्लज है उसमें वही सारी ट्रीटमेंट्स आपको वापस करनी पड़ेंगी जो ट्रीटमेंट इस वक्त हो रहा है। ठीक अच्छा, है, स्लज का फिर अलग से ट्रीटमेंट देना होगा अलग से और ट्रीटमेंट इसमें करना को अलग पड़ेगा। से। और इसमें क्योंकि आप पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन के बाद सारे प्रोसेस करके फिर स्लज निकालते हैं, तो स्लज का कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस केस में, और देखिए हर प्लांट के का एक अलग कॉम्पोजिशन का एक अलग सिस्टम होता है। यस मैम, हाँ। ठीक है, तो वो उस प्लांट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको कैरी ऑन करना चाहता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ऐसे कॉम्पोजिशंस एन एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यस यस मैम। ओके, ठीक है। ठीक है और कोई मैम। कंफ्यूजन? नो मैम, ठीक है। ओके, फिर मूविंग टू द लास्ट स्लाइड। सो जो स्लज प्रोड्यूस होता है दैट इज आइदर इन सेमी सॉलिड कंडीशन और इन ड्राइड फॉर्म। सो इन सेमी सॉलिड कंडीशन what the sludge we get, it is mostly used for fertilizers and composting, whereas the dried sludge, it is mostly used as landfill or as a source of fuel. Okay, now as you can see here we have raw sludge. This raw sludge is then treated and then moved to the different parts, and after aeration there is again the tendency of settling, so again sludge is produced. So sometimes the sedimentation is practiced after aeration so that the sludge, the sedimentation process is taken in as a whole. Okay, clear हुआ? Okay, आप recording अब बंद कर दीजिए।